languages have embraced not that fast. There are multiple issues in that, and we cannot and should not just ignore them. We all should. Has been a boon for many as it carries the book beyond the narrow lands and provides remarkably wide exposure to the book. So, what is the present picture of, say, publication in our national languages then?
When you come to that point, the picture is painful. Whether the languages are small or big, a big language like Marathi, I can take an example. An expression on the face of the American. The tradition on there. And then after independence, see, the things started changing. The education was fully open to all caste, creed and religion, including the backward caste and every religions and all that. So those people, when they came into their 20s or 25, say, let's say, middle 20s, they started writing. And they started writing in their own languages. Mother tongues within mother tongue, the so-called Boli, and see that started enriching Marathi literature. The Marathi literature, the Marathi language was only limited to these two locations, Mumbai and Pune. When I say I am from Maharashtra, everybody asks me, in Delhi especially, are you from Mumbai or Pune? I said no, I am not from Mumbai or Pune. I am from the traditional sugar belt region of Maharashtra, western Maharashtra. Actually, there are better places than this also. The Vidarbha region is there, Marathwada region is there. Even though they are backward, they are very rich culturally. So, what I was speaking about? The writers started coming from different regions, different caste and creeds, and they started enriching the Marathi language. And as far as the publishing is concerned, publishing in the 70s was still limited to Mumbai and Pune. But in the early 80s, publishing started taking a root in other regions of Maharashtra. And a small new publishers started emerging from district places other than Mumbai and Pune. In the 90s, they started to gain strength. Of course, these are not hard sort of limits, but roughly about say 90s or say 2000, they started taking root, and the great renowned publishers of Pune and Mumbai, they started winning the competition from these smaller publishers which were geographically located outside Mumbai and Pune. Secondly,
These publishers, actually there is one more category which I won't be able to speak of, that of critics. Alright, so these publishers started publishing materials which again was of a different quality, more inclusive, and adding much more to the Marathi culture or Indian culture, I should say, because I don't see Marathi culture different from the total culture of the country. So they started gaining things, and with the advent, with the change of technology, in a process, in say around 2010, the publishing process changed because of technology, because of the say social media which came into being. They helped writers. Publisher, the prestigious publisher didn't remain that important for a writer because of this social media. A poet could write on a Facebook and he could be read. It wasn't so everybody can get printed, and therefore the importance of this prestigious publisher has started to diminish. You can print up your book, say 10 copies, and you can distribute in your friends. And if it is a quality work, then it can be reprinted, it can be redistributed. So you can just do anything. As a result of this, the present picture is there are publishers throughout Maharashtra, and instead of prestigious, publisher being prestigious, the seller, book seller, he has started to replace it. In the publishing industry or in the book industry or in the world of books, the seller has become important. Now, why he has become important? Because seller now is not a simple seller. He is somebody who has done his MA, PhD sometimes, who is a scholar and who doesn't find work in the routine manner. What he asks, rather what he proposes is, whatever book you demand, whether it is young or old or whether it is some book published 100 years back, just ask me, I'll see that you will get it. Now, there are people, there are sellers of this type who have emerged and who are doing good business. So the present picture of the publishing in Marathi apparently is, what should I say, in a phase of transition, and it is going along the right way. Of course, there are so many other factors which I may not be able to rather put into words here. These are some some points which I wanted to make in front of you. Thanks for this opportunity. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रंगनाथ पठारी जी। रंगनाथ पठारी जो प्रकाशकों की स्थिति है और जिस तरीके से प्रकाशन हो रहे हैं और उसमें कौन सी विधाएं अभी चर्चा में रहने वाली हैं और इनका भी समय चल रहा है, इस पर भी अगले सत्रों में हमारी बातचीत होगी। बहुत सारे मुद्दे हैं, आप सभी विद्वद्गण हैं और जो इसके संवादी हैं वे लगातार इस विषय पर लगातार सोचते रहे। तो मैं बहुत ही आदर व्यक्त करता हूँ आदरणीय रंगनाथ पठारे जी के प्रति, डॉक्टर के श्रीनिवास राव जी के प्रति। इससे पहले कि हमारा दूसरा सत्र शुरू हो, हम 5 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लेंगे जिसमें हम अपनी मंच सज्जा को नए सिरे से व्यवस्थित करेंगे। इस सत्र की अध्यक्षता करेंगे आदरणीय शीलकाफ निजाम साहब। मैं सभी का आपसे परिचय करवा देता हूँ। आदरणीय शीलकाफ निजाम साहब उर्दू के जाने माने शायर और विद्वान हैं। आपने दीवाने गालिब और दीवाने मीर सहित देवनागरी में कई काव्य कृतियों का संपादन किया है। आपकी प्रमुख कृतियों में दरिया, बयाजी हो गए हैं और गुमशुदा लहर की गूंजती कुटिया जैसी कई कृतियां शामिल हैं।
आपने राजस्थान के उर्दू कवि मखमूद सईदी के जीवन और कार्यों पर एक पुस्तक भीड़ में अकेला शीर्षक से संकलित की है, जो 2007 में प्रकाशित हुई। वर्तमान में आप साहित्य अकादमी के उर्दू परामर्श मंडल के संयोजक हैं। आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हैं। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, कृपया आप लोग स्थान ग्रहण करें। हेमंत दिवटे जी एक प्रख्यात मराठी कवि, संपादक, प्रकाशक और अनुवादक हैं। आप मराठी लघु पत्रिका अभिधानकर के संस्थापक संपादक हैं। मराठी में आपके 6 कविता संग्रह प्रकाशित हैं। आपकी कविताओं का फ्रेंच, इतालवी, स्लोवाक, जापानी, फारसी, मालतीज, सर्बियाई, तुर्की, ग्रीक, गैलेशियन के अलावा अनेक भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। आपने दुनिया भर में कई कविता और साहित्य समारोहों में सहभागिता की है। हम हेमंत दिवटे जी का भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। प्रभात कुमार जी, श्री राम कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से आपने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। आप दिल्ली के प्रसिद्ध प्रकाशन गृह प्रभात प्रकाशन के मालिक हैं। अब तक आपने 6000 से भी अधिक पुस्तकों का प्रकाशन कर चुके हैं। आपको वर्ष 2000 में फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स द्वारा सर्वश्रेष्ठ युवा प्रकाशक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों में प्रकाशक के तौर पर भारत सरकार के प्रतिनिधिमंडलों का प्रतिनिधित्व किया है। आप साहित्य अकादमी और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत के मनोनीत सदस्य रह चुके हैं। मैं प्रभात कुमार जी का भी बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय रमेश के मित्तल जी ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की तथा हिंदी और अंग्रेजी के आप ज्ञाता हैं। आप एक पुस्तक अनुवादक और प्रकाशक हैं तथा सामाजिक सेवाओं में भी रुचि रखते हैं। आप पिछले 10 वर्षों से पुस्तक व्यवसाय से संबंधित लेख लिख रहे हैं। आप डीके चैरिटेबल ट्रस्ट, फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स, एफ्रो एशियन बुक काउंसिल और लाइफ आई पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड आदि अनेक प्रतिष्ठित संगठनों और समितियों के सदस्य हैं। मैं आदरणीय रमेश के मित्तल जी का भी बहुत स्वागत करता हूँ। आदरणीय कवि याकूब हैदराबाद के रहने वाले हैं और प्रख्यात तेलुगु कवि, शोधकर्ता और लेखक हैं। आपने उस्मानिया विश्वविद्यालय से तेलुगु साहित्य में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। आपके 5 कविता संग्रह अब तक प्रकाशित हो चुके हैं। इसके अलावा आपने 5 पुस्तकों का संपादन किया है और साहित्यिक आलोचना की 3 पुस्तकें आपकी प्रकाशित हैं। आपको अनेक पुरस्कारों से अलंकृत किया जा चुका है। मैं याकूब जी का भी बहुत ही स्वागत करता हूँ। आदरणीय चंदना दत्ता जी एक प्रख्यात लेखिका, संपादक और अनुवादक हैं। आपने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। आप कथा संस्था की प्रकाशन शाखा कथा विलासम की सहायक निदेशक रही हैं। आपने प्रकाशन संगठन इंडिया लॉ की स्थापना की। आपने माई अदर हाफ, कृष्णा पाल इन कन्वर्सेशन विद चंदना दत्ता और साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित वीरगम जोगिंदर पाल की सह लेखिका के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं, अपना लेखन किया है। इसके अलावा आप रूटलेज यूके द्वारा प्रकाशित की जा रही संदर्भ श्रृंखला राइटर इन कॉन्टेक्स्ट सीरीज की सह संपादक हैं। मैं आपका भी बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दर्शन दत्ती जी अंग्रेजी में स्नातकोत्तर और एमफिल की उपाधि प्राप्त हैं। आप डोगरी, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और पंजाबी भाषाओं के जानकार हैं। आप जम्मू कश्मीर सरकार के विशेष सचिव के स्तर पर वरिष्ठ KS अधिकारी रहे और स्कूल शिक्षा निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त हुए। आपके प्रमुख काव्य संग्रहों में कोरे काकल कोरिया तालियां, संझा झंका दुआरी दुआरी और ठहरा थे अथरू शामिल हैं। आपने ग्लास ओपेरा, धराल बैगानी और बनवारी लाल बेल सरदारी लाल नामक उपन्यास भी लिखे हैं। आपको 2006 में कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा जम्मू और कश्मीर के कई अन्य प्रतिष्ठित साहित्यिक संगठनों द्वारा सम्मानित किया गया है। मैं डॉक्टर दर्शन दर्शी जी का भी बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और आप सभी अतिथियों से अनुरोध करता हूँ कि आदरणीय श्री काफ निजाम साहब, चंदना दत्ता जी, दर्शन दर्शी जी, हेमंत दिवटे जी, प्रभात कुमार जी, रमेश कुमार मित्तल जी और याकूब जी कृपया मंच पर बताएं। जैसा कि रंगनाथ पठारी जी ने अपने वक्तव्य में भी जिक्र किया था कि प्रकाशक और लेखक का जो संबंध है वो दोनों तरह का रहा है। उसके खट्टे और मीठे दोनों ही अनुभव और निश्चित है कि इन सब मुद्दों पर इस सत्र में बातचीत होगी। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि तमाम भारतीय भाषाओं में
जो लेखन हो रहा है उसमें ऐसी कौन सी विधा है जिसकी पुस्तकें आजकल ज़्यादा पढ़ी जा रही हैं, ज़्यादा बिक रही हैं। प्रकाशक जो बेस्ट सेलर की एक बातचीत अक्सर कर रहे हैं, और पिछले दिनों एक समाचार पत्र दिल्ली से प्रकाशित होने वाले राष्ट्रीय समाचार पत्र ने बेस्ट सेलर की पूरी सीरीज सूची छापनी शुरू की थी, और लेकिन कई उसके भी अपने कुछ क्या नियम हो सकते हैं या क्या मापदंड होंगे वो तो वही बता सकते हैं, लेकिन क्या उन बेस्ट सेलर्स को उनकी रॉयल्टी मिली? इन सब बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनको लेकर के चर्चाएं हो रही हैं, और आजकल तो फेसबुक और तमाम सोशल माध्यमों पर ये जो अभी आपने पठारे जी ने जिक्र किया, बहुत ही वरिष्ठ हमारे लेखक विनोद कुमार शुक्ल, उनकी चर्चा चल रही है प्रकाशकों के साथ। तो खैर इन सब मुद्दों पर ये हमारा सत्र केंद्रित है। मैं बहुत ही आदर के साथ आदरणीय निज़ाम साहब को अब ये सत्र सौंपता हूँ। वे अपने अनुसार से वहीं से आप संचालन करेंगे। यहाँ माइक एक आप दे दीजिए। और आप सभी दोस्तों और हमारे सारे पैनल के मेंबर, बड़ा दिलचस्प लेकिन बड़ा फिक्र अंगेज ये विषय मजमून का इंतखाब किया। तो उसके लिए तो मैं पहले राव साहब आपको और तमाम लोगों को जिन्होंने विषय बनाया, और अभी जैसे हमारे अनुपम जी ने बताया कि अभी आज भी में जो कुछ हो रहा वो सिर्फ हिंदी का नहीं है, वो सभी का है, लेकिन सभी जगह कुछ न कुछ रहता है। मैं अपनी बात की ज़्यादा लंबी न करके, क्योंकि मेरे पास में समय थोड़ा सा पहले से ही हम ताख़ीर से हो गए, पर कोई नहीं। मैं पिछले दिनों ग्रीक पोइट्री कवाफी को पढ़ रहा था, तो उसकी भूमिका में सुबोध जी आपके WH ऑर्डर में लिखा है कि पोइट्री प्रोविंशियल आर्ट है। एलियट ने भी लिखा और भी कई लोगों ने लिखा कि कविता तो प्रोविंशियल आर्ट है, लेकिन वो पहली बार ये बताता है कि प्रोविंशियल आर्ट क्यों है। वो प्रोविंशियल आर्ट इसलिए बाइबल से जोड़ते हैं। बाइबल की कथा है कि सभी मिलकर एक बड़ी मीनार बना रहे थे, और उसको मीनार बना करके ईश्वर तक, खुदा तक पहुंचना चाहते थे। खुदा को जब इतला हुई कि ये यहाँ तक आना चाहते हैं ज़मीन के बाशिंदे, क्योंकि आ रहे हैं कि इनकी ज़बान एक है। उन्होंने फरिश्तों से कहा कि सबसे पहले इन्हें अपनी अपनी ज़बानों से महरूम कर, यानी डिप्राइव फ्रॉम देयर लैंग्वेजेस। उनकी ज़बानें जब खत्म हो गई तो मेरा कहा मैं नहीं समझता और आपका कहा आप नहीं समझते। पड़ोस का आदमी वो कह रहा है कि इस वजह से, आर्डन ये कह रहे हैं कि इस वजह से पोइट्री प्रोविंशियल आर्ट हो गया। ठीक बात है, हो गया होगा ऐसा ही, अगर क्रिश्चियनिटी को मान ले तो ऐसा ही रहा होगा। लेकिन उसके बाद जो अच्छी बात मेरे पठारे साहब ने कही, ठीक यही बात पठारे साहब, मैं नहीं जानता कि आपकी नज़र से गुजरी कि नहीं गुजरी, ठीक यही बात हमारे उर्दू के एक शायर हुए आरजू लखनवी, फिल्मों वगैरह में भी उस जमाने में लिखते रहे हो। उन्होंने कहा कि हिंदी शब्द जो है, यहाँ ई की मात्रा जो है वो असल में रिश्तों को संबंधवाचक है, यानी हिंदी मतलब हिंदकी। इसलिए वो चाहे गुजराती में लिखे, डोगरी में लिखे, मराठी में लिखे, उर्दू में लिखे, तमिल तेलुगु किसी में लिखे, वो हिंदी ही है। जिस तरह हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी हिंदी था, अब तो पता नहीं क्या क्या हो गया वो, पर पहले हिंदी ही था वो। इसीलिए कहते थे कि हिंदी के हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। अब वो कंसेप्ट बदलते रहते हैं क्योंकि लफ्ज़ों के मानी भी बदल गए। हम तो माउस के माने चूहा समझ रहे थे, अब ना जाने क्या क्या मानी हो गए। दोबारा जबानों के मानी भी बदलते रहते हैं। तो ऐसे में जब कविता श्रव्य से पठ्य तक, पढ़ने से, सुनने से पढ़ने की तरफ आ गई, तब उसके साथ बड़े मामला जुड़ गए। उसने अपना स्वरूप भी बदल दिया। अब आप श्रव्य नहीं रहे, अब कविता पठ्य हो गई। इसलिए बहुत से लोग तो श्रव्य कविता को पसंद ही नहीं करते।
मसलन हिंदी में आप लोग बेहतर जानते हैं मुझसे कि अब गीतकारों को कोई बहुत अच्छी नज़र से हिंदी साहित्य में नहीं देखा जाता, ऐसा मिश्र जी आप तो गवाह हैं, तो आप जानते ही होंगे कि हिंदी में गीतकारों को कोई बहुत तवज्जो की नज़र से नहीं देखा जाता। हम चाहे दुष्यंत कुमार जी को कितना ही समझें, लेकिन हिंदी का बड़ा आलोचक उनका जिक्र नहीं करता वो लगभग, इसलिए अब हम सुनने से ज़्यादा देखने के आदी हो गए सभी चीज़ें। हम रेडियो से ज़्यादा टीवी देखते हैं, वैसे ही हम कविता सुनने से ज़्यादा देखना चाहते हैं कविता को। तो बहरहाल इस तरह की और भी बहुत सी बातें हम लोग करते रहेंगे। इसलिए मैं सबसे पहले इसी ऑर्डर से इसी ऑर्डर से, ठीक है, तो मैं सबसे पहले चंदना दत्ता साहिबा से गुजारिश करूँ कि वो आए और अपने विचार प्रस्तुत करें। चंदना दत्ता जी के बारे में परिचय आप सबका हो चुका मेरी अनुपस्थिति में, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। और समय की पाबंदी इस तरह रहे कि हमें शर्मिंदा न होना पड़े राम साहब के सामने। और अब इसके बाद में मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, पहले मैंने शायद ज़्यादा ले कह रहा जी। Thank you, Nizam sir. It's a pleasure to be here. Thank you, Sahitya Academy, Dr. Rao, and sir. The very fact that all of us have come back here after 2 years of huge losses, I think we've been through huge turmoil, upheaval, and yet we are here to talk about books, to talk about writers, books, readers. I would also like to talk more about translators. I think it's a very big thing that we are here again. I don't think in the last 2 years we would have thought that something like this, we didn't know when it was possible. And it is really a gift of time. And therefore I appeal to all of us who are working with books, with poetry, with writing, that we work together as a community of people who are working with different languages. Let's all come together and work with each other so that we can enhance our own languages more, as well as to do a lot more trained work in translations. Patare Sahab just mentioned that our languages are very rich, and he very briefly told us how languages along the way have actually collected different nuances. And I think all of us here are at least bilingual, if not multilingual. I think we have to acknowledge that. And we are also aware of certain positives that have happened in the last, for me these 2 years have been very important, and I think we must see what are the positives that we have seen and what are the negatives that we have seen just in the last few months. One, of course, I think technology has come to our rescue. We've all been locked down, and somewhere technology, we did not realize or we did not know how to use it, but it did come to our rescue in a big way. And therefore, we must train technology to work for us. We must use this whole idea of how we can market ourselves, our books, we can reach out to each other through technology and online marketing. I think we should become very conscious of this. We should not ignore it. Somehow we have to, it has brought us closer, sitting here in Delhi, I can immediately reach out to somebody in Maharashtra and Tamil Nadu, and we can do a lot more work together if we just tell ourselves that that is what we have to do. So that readership, I think, at least I felt it when I talked to friends, people that I've known closely. During these 2 years, I think many of us have read far more than we were reading otherwise. Of course, there have been huge losses in the publishing industry because physically people could not go out there and buy books, which was taken care of slightly because of online marketing. Publishers do believe that some amount of sales have increased online, which hasn't made up for the actual physical losses, but yet it has given us this option that yes, we can make this work for us as readers, writers, translators, and people who are book lovers primarily. I would just like to mention what happened in the, I think just about the last month. One of the biggest global corporations shut down the Indian publishing wing. And that,
we see them as a big corporation, right? They are shutting down 60 or more shops across the US, across UK, bookshops, actual bookshops. They are shutting down. So they may not be bookshops in India, but I think it is a trend, and we have to beware of that. We have to tell ourselves that if this is what is happening, maybe we should make other routes for ourselves by which we can talk more and make our books work more between all of us. So this Amazon, we don't know what exactly the details are, but overall it is a warning for us. And I think as people who produce books, who buy books, who write books, who are working with books, we must keep this in mind now, especially after having come out of this lockdown period. Now, having said that, like you said, sir, the figures that we look at now in our own languages, let's say it comes out of Malayalam or Marathi, Bengali, Tamil, the figures are astounding. The number of titles publishers are actually publishing every year, the sales that they are doing, I don't think English publishing houses have the same kind of numbers to compete with at the moment. It may have been true, like you said in the beginning, it was a different scenario, but I do feel that we have really come a long way, and our readership in our own languages is far, far bigger than it is in English. Although, having said that, I don't think we should dismiss the use of English completely, because it is a late language. Publishers acknowledge that when their books are translated into English, the visibility is far more. People from outside the international market can, see. Those books which have been translated into English find a better market outside of India than books which have not yet been translated. So if you go to an international bookseller with a book in Bangla, for example, it will take a lot more persuasion, a lot more effort in order for that book to go outside of our country to be translated and published. But this is the trend that has been seen. If it's translated in India into English, then for whatever reasons, whether we like it or not, the visibility and the accessibility is far more. Now, that being the case, maybe we should look at ourselves who are translators, particularly people who are in the passion in the work of translations. I think it's time for all of us, not just people like me who translate into English from 1 or 2 or 3 languages, but people who are working, let's say in Marathi, who are working with poets. There are other people who are working with writers in Tamil, in all of our languages. We need to build a network. We need to come together and have a community that will support each other as translators. And when I say translations, it's my experience, having worked in translations for almost 20 years now, that many of us do not realize what translation should actually mean. We call ourselves translators. We translate from one language to English. Here I'm talking specifically of English because I am translating into English. But you don't understand the richness of the language that the original text is coming out of. We are flattening it because we are going into English, which just has perhaps one register. And in the Marathi, in the Bangla, in the Tamil, there's so much that we are talking about. But do we, as people who are translating, let's say, into English in this case, are we sensitive to that? I don't think many of us are. We need to be sensitive. There has to be a training to sensitize translators. And what would that mean? Many of us have day jobs. We work
And then when we have time, either at night or whenever, we sit and translate. Because translation does not give us money enough to keep ourselves going. We cannot, we can't live off translations, if that is how I have to put it. Translators, and I say this again and again, we need respect. We need to be acknowledged. The names of translators have to be seen around. We have to be paid. And organizations, individuals, communities, we need to come together. And it is not just as a community of translators. We need to come together with writers, with publishers, with readers. We have to be together in this journey, and I think it's necessary, and ultimately this is it. If we read more and translate more, I think we not only make our languages, our own knowledge of that language richer, we are actually able to put these books out there. Because I'm part of several translation groups, and people, other researchers, scholars, translators, they are discussing books. They are discussing books from Spanish, from Latin, from Japanese and Chinese even, but I don't see us discussing English books from India. Not a Bangla book, not a Marathi book, not a Tamil book, not a Malayalam book. There's no discussion about it. These groups are huge. These are people who are teaching. These are people who are taking the books back to readers. And we need it because we need our young people, my child, your child, our children, they need to get back to our languages. Whether it's education or whatever it is. But I think we are losing out. We don't read anymore so much. Particularly those of us who live in a place like Delhi. I think it's sad. But we have to make a concerted effort. I think we are in the right place here together with friends who are all working with books and languages. We need to come together, look at the quality, look at the, a whole lot of things like marketing, sales, all of that included. And I think we need to go forward from here. And I say it with a sense of urgency because, these 2 years, you just don't know what's coming again. So let's get together and work, please. I mean, that is the space from where I am coming, and I'm sure all of us are in the same space. Thank you so much. Thank you very much. थैंक यू चंद्रा दत्ता जी। दो बातें अर्ज करूँ कि ये विषय जो है, पहली बात यह है कि भारतीय भाषाओं में प्रकाशन की स्थिति, इस पर राज साहब को, रेणु जी को, अनुपम जी को, इन एकेडमी वालों को जरूर बोलना चाहिए, क्योंकि कोई प्रकाशक यहाँ, मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होगा जो एक साथ 24 भाषाओं की किताबें छापता हो। कोई इदारा, क्या करिए उसे, कोई मंडल ऐसा नहीं है कि जहाँ 24 भाषाओं की अलग अलग किताबें छपती है, और वो कैसे बिकती है, क्या होता है, तो आप लोग बेहतर होते हैं। राज साहब ने तो फौरन शुक्रिया अदा करके निकाल दिया। अनुवाद के बारे में बहुत उम्दा गुफ्तगू आपने फरमाई। मैं गुजारिश करूँगी इस बार जो मैंने कहानी आपको सुनाई थी बाइबल की, उसमें मुझे ऐसा कई बार लगता है कि हम सारे अनुवाद इसीलिए करते हैं कि ईश्वर का वो दिया हुआ शाप उसे हम वरदान में बदल दें। इसीलिए कि मैं पठारे साहब को पढ़ूँ, मैं किसी मराठी के पोइट को पढ़ूँ, सिंधी गुजराती पढ़ूँ, उसके लिए तर्जुमा चाहिए। तो हमने कहा कि अच्छा, आपने हमें ज़मीन पर भेज तो दिया है, लेकिन हम उसका इंतखाब इस तरह लेंगे कि हम आपने भाषाओं से हमें वंचित, डिप्राइव्ड फ्रॉम माई लैंग्वेज, कोई बात नहीं, मैं इसका इस तरह रास्ता ढूंढूंगा। बहरहाल अब उसके बाद में मैं डोगरी के बहुत अहम और उनका सारा परिचय आप ले चुके। मैं मोहतरम दर्शन दर्शी साहब से निवेदन करूँ कि वहाँ थैंक यू सर। And my friends on the stage and my friends in the hall. I will try to be very brief, and taking a cue from the inaugural session speaker, I will also tell a little story. Not exactly a story, a little painful resulting story. As he was telling about a tweet of a very renowned Hindi writer,
I also happened to read a news item sometime back that Gunahon Ka Devta by Dharamveer Bharti has gone into 100th edition of its publication. Attached to that was a little news that the royalty has been reduced from 20% to 15%. So, what I'm trying to drive at is that okay, a writer has not only the market in his mind when he writes, he has a passion for writing, he has a passion for his language, a love for words. But the publisher is a man of market. His eye is on the money primarily. But in a case like this, where a book is running in its 100th edition, why the royalty should be reduced? Well, if this is the situation here, how about a language like Dogri? We have forget royalty. We have hardly any publisher. In a language like Dogri, almost all, if not 100%, books are self-published. Self-published, self-marketed, and one English writer, Ramulia rightly, has been reported to have said that one who writes without money is a blockhead. Well, unfortunately, then most of our Dogri writers are blockheads because none of us is able to garner that much of money which he or she is spending on its publishing. You all know what is self-publishing. And self-publishing world over has gone so popular, you must have all seen a lot of notices appearing in your mails even, on your WhatsApp even, and not only in India. I have been staying for quite some time in Canada, I have seen there also. They catch hold of you somehow, I don't know, the courtesy Google. The Google is the biggest detective of the day. They would send you a message. Okay, you want to get published? Contact us. So they try to tell you that okay, give us this. They are offering a package of 2-3 types. Normal, medium, excellent or something like that. And on that packages, you get them the money, they will get you the book and send you 10 copies as complimentary, rest they will sell. But as for Dogri is concerned, 50 years back, we had publishers. When the Dogri language was hardly being taught in school, colleges and universities, the language writers did have publishers. Now the same language is being taught in university, colleges and schools. And lot many books are coming up, but almost all of them are self-published. However, I think the problem can be seen in all those areas, which problem is in fact common to many other Indian languages. Readership. Readership certainly is one of the problem, and obviously a publisher is a market man, he wants to sell his material. But one thing is more there. Now, sorry for getting a little digressed. My pain lies in this fact also, that self-publishing is not such a handsome benefit for the language or language lovers or for literature. You know what my practical experience as far as Dogri is concerned, what I see is that when I self-publish, I don't get it edited by anybody. In whole J&K, not only Jammu, in whole J&K, I tried to contact certain publishers and found that there is only one publisher who has an editorial board. No other, I should say they are merely printers, they are not publishers. What a publisher is without an editorial board, without any critique getting it done, as one
English writer Irving has said that 3/4 of my entire writing was rewriting. So rewriting obviously means editing and getting it precise yourself. When you are self-publishing, what happens? Okay, money is mine, paper is mine, I get 500 copies, then spend another couple of thousands to hire a small hall, invite people, take tea, enjoy and distribute free of copies. But there's absolutely no editing, there's absolutely no critical that think, okay, later the Alochak or the critics or something, they may come, but the book has come out. And that book will add to that huge lot of those books where many of them may be very good or excellent. And when such a book happens to land in the hands of someone who is not really aware of the situation of that particular language, in this case, Dogri, he may simply say, oh my God, what a trash is being written in Dogri. So there are many problems like that. And one thing for Sahitya Academy also, they used to have a scheme where the first book of a young writer probably they would publish. It appears to have been disbanded. Now you are again revived. Thank you very much. And with this hope that some young man of Dogri would be able to get this published. Thank you. There is a glory in self-publishing. Oh yeah, There is a glory in self-publishing, including a lot of global laureates who were self-published. I mentioned the name of Rabindranath Tagore, who was a self-publisher. लेकिन ये सारे से सुबोध जी एक बात ये लगती है कि ये लिखने का काम जो हमारे बुजुर्ग कहते थे कि कोई भला काम करो, लिखने पढ़ने में न फंसो, उसका अंजाम क्या होता है ये इससे जाते हो। मतलब एक तरह से वो यूरोप था, माफ कीजिए, जहाँ आज भी किताबें बिकती हैं। हम किताबें, मैं उर्दू का लेखक होने के नाते मैं आपको बताऊं कि अगर मैं किताब छपाऊं तो वो किताब बांटने के लिए होगी, बिकने के लिए नहीं होगी। और मेरा ख्याल ये है कि आखिर ये बैठे अभी मुझे अभी मालूम हुआ कि मैं अभी इनसे अलग से बात करूंगा बाद में अपनी कविताओं के बारे में, लेकिन जैसा ये बता रहे हैं कि हिंदी में, और मेरे प्रकाशक राजकमल भी रहे, वाणी भी है, वाग्देवी भी है, तो इनसे मुझे अंदाजा हुआ कि हिंदी में उर्दू की गजलें जो देवनागरी लिपि में लिखी हुई है वो तो 9 एडिशन मेरे भी छप गए, लेकिन हिंदी की लिखी हुई कवि की अनुपम की शायद 1 एडिशन भी पढ़ा होगा, शायद नहीं पढ़ा होगा। तो ये सूरत हाल कहाँ हो गई? हमें ऐसे में ये भी पता लगाना चाहिए कि हमारे पाठकों को क्या हो गया। अगर पाठक है, किताब बिक रही है, प्रकाशक जरूर छापेगा, क्योंकि प्रकाशक का मिशन अब कम रह गया है, वो उसके लिए व्यापार है। तो जो बिकेगा उसी को छापेगा, मैं नहीं बिकूंगा तो मुझे कौन छापेगा। पर ये मैं दूसरी, माफ कीजिए, लेखक होकर दुख जब सुनता है आदमी तो उसे जी जाके भैया बात ये है ना कि जाके पाँव न परी विवाही वो क्या जाने पीर पर आई। तो लेखक ही लेखक का दुख जान सकता। बहरहाल मैं लेखक होंगी पर दुख तो जानता ही। बहरहाल मैं हेमंत ट्वीटे साहब से निवेदन करूँ कुछ सुशील लाए, लेकिन एक सुख जो तशरीफ साहब जिसकी तरफ हमारे सुबोध जी ने इशारा किया वो ये है कि मेरी किताब पर मेरा है मुझे 10 कापी दे के छुट्टी पा ले 5 कापी, लेकिन जब मैं छापता हूँ तो मुझे ये अधिकार है कि मैं चाहे 100 ही किताबें बांट रहा हूँ। वर्षों से ये काम सॉरी सर। आदरणीय शफी साहब, राव साहब, हमारे पाटारे सर और हमारे सरकार सर और आप सब मित्रों और सुबोध जी, मैं तो सुबोध जी बात करता हूँ। Actually, 3 previous
2 or 3. Yeah. Maybe I call 3 basically because I consider that even Pathareswar batted for Marathi literature. So I didn't bat for any particular language. no, but still there was there were a lot of things you already said. Right. Anyways, but I wanted to first object to the, I don't know the language, maybe in Urdu, people may not be buying Urdu poetry. Or maybe your publisher are telling you that we are not selling. But let me tell you humbly that during last 2 years, I am basically publisher of poetry. I am not publisher of I publish poetry in Marathi and in English, and I publish poetry in translation into English and also in Marathi. But I will tell you that during the lockdown, we actually sold books. I will say in turnover around 9 lakhs rupees books of poetry. So I think that, and we have been selling books. We have not been asking any poets. You ask any of my poets from, no, not rich guy. That's the problem. People say that you are a rich guy. You have used your lots of money in publishing. But no, I used my little money for publishing my little magazine in Marathi. That time it was needed, but not for poetry publishing. Actually, from the day we started publishing, we actually started earning profit, and we have been selling actually books, 1,000 copies or so at least. And like during the lockdown, people are saying people are not buying and people are not reading, whatever. But I think people actually spend a lot of time and they spend lots of money buying books online. It is like basically who have been now democratized, because in my case I'll tell you, no booksellers or the distributors were asking for, or if we used to approach to them, they used to say our poetry doesn't sell, so we don't want to keep your books. But see, the problem is they never understood that poetry can sell if you market it well. And fortunately for us, though we have shifted from books to this screen, it has worked for us. It has worked for writers, and it has worked for poets more. I will say it has worked more for poets. Some poets who want to just publish their work on Facebook and get some notice, they are getting joy of publishing their poetry. And they are not, I mean, nobody was bothered about the critique and all that. People like me who are bothered about critique and who bother about what people say of this different kind of poetry or whatever, we get satisfaction because there are now readers from Gadchiroli and Chandrapur and Sangamner and so on, from all the corners of Maharashtra who are buying books of poetry. Otherwise it was very difficult. Beyond Mumbai, Pune, Thane and say some Nagpur and Aurangabad one store and one store in Kolhapur, there was no poetry available. And the poetry available there was always of, in my opinion, the poets who were basically songwriters or who were actually entertainers. And what happened basically when TV came and when this mobile came and when we actually turned towards this new medium, the whole lot who were entertainers actually went immediately to the new mediums. They started performing there. And the real ones, the people like us who are actually writing because we have to write mentally to satisfy us mentally or whatever, I mean whatever you call it. We write, whatever we write is, we consider it as a serious thing, and we were never interested in, say, lot of what you call fan following and who are poets and writers. Their faces are almost unknown to the common person. So that everything has helped.
I will tell you, पठारे सर never told you because खुद की बड़ाई क्यों करेंगे कोई, ऐसा होता है. Year before last, पठारे सर's novel सात पाटिल कुल वृत्तांत. It was around 800 pages book. It is actually not was, because the first edition of this book, I spoke with my friend who is a publisher of him. They printed 5,000 copies, and that book of 1,000 rupees got sold all over Maharashtra. And that is actually a novel. Why people were crying every time? हमारा book sale नहीं होता है, हमारा book sale नहीं होता है. Sir, you are there. Yes, So am I correct? you are absolutely right. So in Marathi, Now, this was my first experience, of course. right? But that actually Patare sir would not have done, because this new person, Sumit Lande, he knows how to do business. He knows that he has to go to, along with writer, 5,000 copies in a year. in a year. He is already publishing second print. So both things. Huh? Both is in print. Both editions. Whatever, the edition is okay. I am mostly what I think edition can be. I will print say 100 copies and I'll call it. There are people who say, my first edition sold out. I mean, this is marketing. I mean, I can't say नहीं बुरा कर रहे हैं, नहीं अच्छा ही कर रहे हैं. The second edition, but actually how many copies? So within 2 years he has sold more than 5,000 copies. Even our Nemade sir's Hindu, the print run was what? 5,000 copies. People were waiting for his book for ages. Though we have maybe difference of opinion, but I read it. I read his book also. I mean, of course, he is one of my favorite authors, Pathariji. For what he has written, which we should have written, I have told him. But I don't write novel because the stalwarts are here who are writing novels. I write poetry. So I'm okay in my art. Anyways, I wanted to tell this because there is a gloomy picture, and the gloomy picture is like, क्या हमें इंडियन लोगों को रोने की आदत है? मुझे तो ऐसा ही लगता है. Because we basically publishing, we don't have any data of how many books are printed, how many books have got ISBN numbers, how many books are sold, and no agency. I think Sahitya Academy can ask cultural department to get this data, because previously the writers like the non-writers, I mean the writers like bestsellers, Harold Robbins kind and Sidney Sheldon and all, they used to sell lots of books. We have heard they used to sell lots of books. Now there are maybe more bad writers in English. They are selling books, but who knows? Maybe they are selling 5,000 copies and they are claiming that they are selling 1 million copies. Because where is the data to get it acknowledged? हम तो अभी कुछ भी झूठ बोलने में क्या है? झूठ तो हम कभी भी बोल सकते हैं. चेतन भगत ने 3 बिलियन कॉपीज बेची है. Because वो MBA किया हुआ है, उसके पब्लिशर ने भी MBA किया हुआ है, मैंने भी किया है. लेकिन फर्क यह है कि मैं कविता का अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने 1000 कॉपी एक दिन में बेची, nobody will believe. But a polished person who's, I mean, मैं तो मराठी में बोलूंगा मराठी बुक के बारे में. But if Chetan Bhagat says that I sold 10 million copies in 1 year, the people will believe. Because हमारी आदत यह है कि हम हमारी भाषा को ऐसा समझते हैं कि भाई हमारी भाषा में तो मैं झूठ भी नहीं बोल सकता हूँ. और सच तो ठीक है, सच को भी हम लोग झूठ की तरह बोलते हैं. क्यों? और सीधी बात बताता हूँ, I spent
29 years out of my 55 years. I am 55 today. I mean, from last 8 months, 55, 8 months now, I am 56. Out of that 29 years I spent in a small, nice village, wonderful. I mean, I had tough life, but wonderful life. Because of that, maybe I could actually write poetry and जो है वो अच्छा जी रहा हूँ. हमें सब जगह सिखाया जाता था. मेरे तो बाजू में कोई रहने वाले थे इंग्रजी के प्राध्यापक. He used to say, तुला इंग्लिश येते का? I was in 10th standard. Can you speak in English? I said no. क्या आदमी है? तुम इंग्लिश नहीं पढ़ोगे तुम आगे नहीं जाओगे. To tell you frankly, in 8th standard I was taught English in 8th standard. A, B, C, D, and that too till 10th standard I was taught English in Marathi. But later in my life, later days, I actually read lots of works in English, not just to improve English, but just to improve my vision. And I actually read every kind of book. And I became publisher also later of English poetry. भाषाएं सीखना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट हमारे यहाँ जो लोगों ने एक किया हुआ है ना कि भाई इंग्लिश बहुत बड़ी भाषा है और बाकी की भाषा वो बिल्कुल झूठ है. अभी आई वाज स्पीकिंग विद चंदना फॉर फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट एंड शी टोल्ड मी दैट some writer, she got this data that some book was published, like 4 lakh copies of the book. I mean, I don't know the name of the book, but 4 lakh copies were public, I mean, printed and sold. कहाँ है न्यूज़? और ये चेतन भगत और ये अमीश त्रिपाठी और कोई है, they are actually writing like a kid. I mean, I will not call them authors also because I have read Half Girlfriend and all just to know कि क्या चल रहा है भाई. वो खाली Upton and Dispatch Courier करके एक न्यूज़पेपर था, वहाँ BZB था, BZB. He used to write better column than that of the stories these guys have written. Only thing is there is a factor of say little shock. Forgive them. Huh? Forgive them. I actually forgive them. But we should learn basically to say things that we have done. हमारे आगे मराठी में क्या होता है, हम तो पहले से पोथी पढ़ने वाले लोग हैं. रोज श्रावण का 1 महीना we will read पोथी, even though we were not literate. We used to listen to pothis, and we were. I mean, we are in love with words. That's why we have, like in Bengali, we have puja issues, we have Diwali issues, we have Sahitya Sammelan, we have many Sammelans, many gatherings, many reading programs, and now people have realized that this should not be done only in Pune and Bombay. They have learned that they should travel to Sawantwadi, Satara, Karad, where people are hungry. In Bombay, people don't have time for anything because they work like what? They work like that red or black ants. जिनको कुछ नहीं सुनने को आता है, समझ में आता है, वो चल रहे हैं भाई, पागल जैसे चल रहे हैं. In other towns, they have understood that life is better there. Of course, I am going to live in Bombay for next 3 or 4 years, and afterwards I am going to go to my village because I know that there is life there. Anyways, I have so many points, but I want to tell you that don't be negative. We are on the right path, and technology will again give back something great to us. And दूसरा भी मैं बचा, लास्ट पॉइंट एक है कि अमेज़ॉन और ये सब प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं,
या किंडल आ रहा है, उससे हमारी बुक्स ज़्यादा बिकती है. ओनली थिंग इज आवर पब्लिशर्स and the stakeholders, they are not telling writers or others truth. That's the point. The author should ask for the truth. I said on Amazon, I am telling you, my books are not available anywhere. Not my only. Poetry wala books are not available in any store throughout India except Amazon store. Paper wall books हमारा साइट है वो, और किताब खाना. But we sell, we dispatch books every day, and there are readers. There are readers who want to buy, they want to own poetry book. Poetry is the last thing people say, they will buy. But people buy. People in India are very hungry, and we have to look at this potential. And we are, in maybe 10-12 years, everybody will forget reading. We will not. There was a survey where somebody said that European people also, they read lot. I will tell you, one survey was published, 30 countries including Europe and Asia. Indians spend 10.4 hours per week on reading. We are number 1. Second is Thailand, third is China. And then there are European countries. They actually may be knowing more things about enjoying life, but we enjoy life reading books and reading. We are more knowledgeable people because we read. And all this what I have said, you can Google and get confirmation. This article, this thing I told you is data story. Indians spend more time reading than anyone else in the world. Was written by Sangeeta Bose, November 1st, 2017. We don't have latest data, but I think during the lockdown, we spend much more time in reading than that of whole of Europe plus Asia. Thank you very much for the opportunity. Thank you very much. Thank you. बहुत सारी बातें उन्होंने बताई, और आपने देखा होगा कि हमारे शिवटे साहब ने एक बात ये बताई कि आपको हौसला नहीं हारना चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए. टेक्नोलॉजी उतना नुकसान नहीं कर सकेगी जितना हम सोच रहे हैं. ये अलग बात है कि बहुत सी चीज़ें भविष्य में होती हैं, और ये एक रहस्य है. टेक्नोलॉजी तो खुद ही अपना आप एक मिस्ट्री है, और मिस्ट्री की पहली पहचान ही ये है कि वो मालूम तो ये होती है कि हमने जान लिया, लेकिन असल में जब भी उसे देखते हैं फिर लगता है ना, अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है. शायद कविता का यही मिस्ट्री रही होगी जिसे हर पाठक बार बार पढ़ना चाहते हैं. पढ़ा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. और अब मैं जनाब प्रभात कुमार जी से निवेदन करूं कि असल मैदान तो आप ही का है, सारा खेल आप ही से. माननीय अध्यक्ष जी और सम्मानित मंच तथा यहाँ उपस्थित साहित्य प्रेमियों, सबसे पहले मैं साहित्य अकादमी का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बोलने का अवसर दिया. और ये जो विमर्श है भारत में प्रकाशन की स्थिति, बहुत गंभीर विमर्श है, क्योंकि स्थिति बहुत गंभीर है. कुल मिलाकर देखें तो परिदृश्य बड़ा गंभीर है, परंतु कुछ भाषाएं ऐसी हैं जिनके कारण भारत का प्रकाशन उद्योग गर्व अनुभव कर सकता है. मराठी, बांग्ला, मलयालम, गुजराती, इन प्रांतों में पुस्तकें बिकती हैं क्योंकि वहाँ एक पुस्तक संस्कृति है. वहाँ पुस्तकें आपके जीवन का हिस्सा बन गई हैं, इसलिए वहाँ पुस्तकें बिकती हैं. उत्तर भारत में और अन्य प्रांतों में अभी वो स्थिति नहीं बन पाई है. पुस्तकें हमारे जीवन का हिस्सा नहीं बन पाई है, इसलिए वो नहीं बिकती. प्रकाशक पर हमेशा एक प्रकार से तलवार लटकती रहती है कि वो लेखक का शोषण और दोहन कर रहा है, जबकि स्थिति ऐसी है नहीं. किताब बिकेगी तो प्रकाशक को रॉयल्टी देने में कोई अर्थ नहीं है. कई बार लेखक भी बहुत अप्रत्याशित मांगे रखते हैं, जिसके कारण दबाव में आके प्रकाशक कुछ भी हामी भर लेते हैं
और बाद में बदले झाँकते हैं, झूठ बोलते हैं, बचते हैं। तो ऐसी अप्रिय स्थिति से बचना चाहिए और एक बिल्कुल लिखित अनुबंध होना चाहिए लेखक और प्रकाशक के बीच में, जो तय है उसको निश्चित रूप से पालन करना चाहिए। तो विश्वास जागृत होगा और चीज़ें ठीक होंगी। केवल ये कह देना कि साहब किताब तो बिकती है, प्रकाशक मुझे बता देंगे, ये स्थिति ठीक नहीं है। और आज की तारीख में हम सब देख रहे हैं धीरे धीरे बुक शॉप समाप्त हो रही है। पहले हम जाते थे, कानपुर में करण बुक डिपो है, बहुत पुरानी संस्थान है। वो कहते थे पहले हम शनिवार रविवार को यहाँ पे सांस लेने की फुर्सत नहीं होती थी, दोपहर का भोजन नहीं कर पाते थे। अब वो कहते हैं हम खाली बैठे हैं, क्योंकि अमेजोन फ्लिपकार्ट से पूरे ट्रक जाते हैं, किताबें लोग वहाँ डिलीवर कर देते हैं। पुस्तकें बिक रही हैं, निश्चित रूप से पुस्तकें बिक रही हैं, पर अभिरुचि बदल गई है। साहित्य के प्रति लोगों की अभिरुचि कम है, साहित्येतर विधाओं में रुचि बढ़ी है। आज उपन्यास कहानी की अपेक्षा लोग जीवनी, व्यक्तित्व विकास, सेल्फ हेल्प, करियर, इन विषयों पर पुस्तकें पढ़ना चाहते हैं, पुस्तकें बिकती भी हैं। कविता का आपने बताया कि अच्छा प्रतिसाद मिलता है, परंतु हिंदी की स्थिति बहुत दयनीय है। बड़े बड़े हिंदी कवियों की पुस्तकों के संस्करण 10 वर्षों में समाप्त होते हैं। हिंदी में स्थिति ये हो गई कि आज पुस्तकें, पहले हम स्वयं 2000 प्रतियां प्रकाशित करते थे, फिर 1000 पे आए, अब 500 प्रतियां छपती हैं। कुछ प्रकाशक किताब छापते नहीं हैं, किताब की प्रिंट ऑन डिमांड 10 कॉपी, 20 कॉपी, 50 कॉपी छपवा लेते हैं, लेखक को प्रसन्न कर देते हैं, पुस्तकें थोक खरीद के लिए सबमिट कर देते हैं। कहीं वो खरीद में आगे तो किताब छाप देंगे, अन्यथा उसका भविष्य वही समाप्त हो गया। ये वस्तु स्थिति है हिंदी के भारत में प्रकाशन की स्थिति। मैं ये नहीं कह रहा सब भाषाओं में ऐसा है। हम लोग जैसे आदरणीय पठारे जी ने शुरू में जो उदाहरण दिया कि लोग पूछते हैं कितना छापा, क्या किया। सर VS नायक भारत आए तो हम उनसे संपर्क में आए, उन्होंने कहा कि हमने आग्रह किया हम आपकी किताब छापना चाहते हैं हिंदी में। तो बोले मेरे लिटरेरी एजेंट को लिख दीजिए। हमने उनको लिखा, पूरा इतना विस्तार से परिचय दिया कि हम 50 वर्षों से प्रकाशन कर रहे हैं। तो उनके एजेंट ने पूछा कितनी प्रतियां प्रकाशित करेंगे, हाउ मेनी कॉपीज विल यू पब्लिश। हमने उत्तर दिया विल यू पब्लिश 1000 कॉपीज। उनका उत्तर आया दिस नंबर वी गिव एज कॉम्प्लीमेंट। बात समाप्त हो गई। अगले वर्ष सर VS नायक फिर आए, हम उनसे मिले, उन्होंने पूछा व्हाट हैपेंड टू माय हिंदी। उन्होंने कहा सर दिस वाज द कम्युनिकेशन और दे हैव नॉट गिवन द राइट्स। तो उनके यहाँ पे साहित्यिक मित्र थे, उन लोगों से उन्होंने उनसे चर्चा की और पूछा कि क्या, जिसे लोग कहते हैं हिंदी का बड़ा प्रकाशक है, वो कहते हैं कि हम किताब की 1000 प्रतियां छापेंगे, सही है। 100 करोड़ की आबादी का देश भारत, उसमें कहते हैं हिंदी की पुस्तक 1000 छपेगी। जब वो संतुष्ट हो गए तो उन्होंने कहा अब आप लिखिए। हमने लिखा, ससम्मान उनकी पुस्तक को प्रकाशित किया, 2 पुस्तकें हमने छाप ली, पर वो प्रतिसाद नहीं मिला। जो पुस्तक पूरे विश्व में मिलियंस में बिकती है, वो हिंदी में 1000 प्रति हमने छापी, दूसरा संस्करण नहीं किया। तो स्थिति गंभीर है। अगर पाठक होंगे तो प्रकाशक को क्या नुकसान है? किताब बिकेगी तो प्रकाशक क्यों नहीं छापेगा? और जिस प्रकार से हमको प्रतिसाद मिल रहा है इन दिनों में, कोरोना काल में जिस प्रकार से पुस्तकों के प्रति लोगों की रुचि बढ़ी है, तो हमारे अंदर एक आश्वस्ति भाव जागृत हुआ है कि हम भविष्य उज्ज्वल है, चीज़ें ठीक होंगी। पर उसके लिए हमको सबको प्रयास करना पड़ेगा। केवल प्रकाशक का दायित्व नहीं है, लेखकों की बराबर की जिम्मेदारी है, मीडिया की बराबर की जिम्मेदारी है। आज किसी साहित्यिक किसी भी समाचार पत्र में, पत्रिका में साहित्य के लिए कोई स्थान नहीं है। अच्छी पुस्तकें छप रही हैं, कैसी पुस्तकें छप रही हैं, कोई जानकारी नहीं है। आप समीक्षकों, आलोचकों को पुस्तक के प्रति भेज दीजिए कि इस पर कुछ लिख कर दे दीजिए, आप अपेक्षा मत कीजिए कि वापस कुछ उत्तर मिलेगा। तो ऐसे वातावरण में जब हम जी रहे हैं, तो उसमें अगर ई बुक बिकती है या ऑडियो बुक बिकती है, तो हमारे लिए तो वो एक आनंद का क्षण है कि कम से कम पुस्तकों के प्रति एक जागृति तो है। वो रूप कुछ भी हो, पुस्तकें कभी समाप्त नहीं होंगी। और पहले था कि सब ये सब ई बुक्स आ रही हैं तो प्रकाशन का क्या होगा, प्रकाशन चलता रहेगा, मुद्रित पुस्तक का कोई स्थानापन्न हो नहीं सकता। जब आज से 15-20 साल पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया था तो लोगों को बड़ा डर लगा था कि ये तो अखबार समाप्त, अब अखबारों की इतिहास और अतीत के क्षण हो जाएगी। पर वो दिख रहे हैं, मीडिया अपनी जगह, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपना काम कर रहा है, प्रिंट मीडिया अपना काम कर रहा है। तो चैलेंजेस बहुत हैं, हम सबको मिलके उसमें से मार्ग निकालना पड़ेगा। साहित्य का आदमी ऐसे विमर्श करता है तो एक आश्वस्ति जागृत होती है, पर हमको अपने घर से प्रारंभ करना पड़ेगा। अगर बालपन से हमने बच्चों के अंदर संस्कार डाल दिए पढ़ने के,
तो कोई कारण नहीं है कि बड़ा होने पर भी वो पुस्तकें पढ़ने के लिए समय नहीं मिलता। और बात साधनों की नहीं है, साधन भरपूर हैं। अब आप चले जाइए शाम को इंडिया गेट पे, एक आइसक्रीम वाले के पास खड़े होंगे, एक परिवार 1000 रुपये की आइसक्रीम खाओ। आप पिक्चर देखने जाते हैं, 4 लोग 2000 रुपये खर्च कर रहे हैं। तो साधनों की कमी नहीं है, वृत्ति की कमी है। वो प्रकृति हमको विकसित करनी पड़ेगी कि हम पुस्तकें हमारे जीवन का हिस्सा हैं, हमें उनको पढ़ना चाहिए। केवल पाठ्य पुस्तकें पढ़ के हम अपने बच्चों को बड़ा करना चाहते हैं कि इसको अच्छे नंबर आ जाएं, उसको ज्ञान नहीं देना चाहिए। ज्ञान मिलेगा पुस्तकों से। हम जब छोटे थे, हम पुस्तकालय से हर महीने एक किताब इशू होती है और फिर अगले महीने वापस देते थे, पूछते थे टीचर्स क्या पढ़ा इसके अंदर। तो एक पढ़ने की प्रति हमारी अभिरुचि जागृत है। देखो ये छोटे छोटे कदम हैं जिनके कारण ये संकट उपस्थित हुआ है, क्योंकि हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। मराठी में, बंगला में, वहाँ पुस्तकें जीवन का हिस्सा है, लोग उपहार में देते हैं पुस्तकें। किसी का जन्मदिन हो, किसी के विवाह की वर्षगांठ हो, कोई मांगलिक प्रसंग हो तो लोग पुस्तकें देते हैं। उत्तर भारत में दुर्भाग्य से भी ये प्रवृत्ति बन नहीं पाई है। बनेंगे तो निश्चित रूप से उसका प्रतिसाद मिलेगा। और अभी अमेजोन, फ्लिपकार्ट के माध्यम से पुस्तकें दूर दराज क्षेत्रों में पहुँच रही हैं, क्योंकि बुक शॉप्स तो धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। अब पुस्तकें कोई रखना नहीं चाहता तो जबरदस्ती उसके यहाँ रख देंगे तो वो 2 महीने बाद कहेगा वापस ले जाओ। किसी के यहाँ ऑन सेल बेसिस पे 5 कॉपी रख देंगे, 2-3 महीने वो संभाल कर रखेगा, उसके बाद कहेगा उठा के ले जाओ। आप नहीं लेने जाएंगे तो जब वापस लेने जाएंगे तो 3 कॉपी लेगा, भैया मुझे पता नहीं क्या होगा। ये संकट हमारे सामने है, पर स्थितियाँ बदलेंगी। हम अपनी ओर से जितना प्रयास कर सकते हैं हम लोग उतना प्रयत्न करते हैं। हमने भारत के सभी प्रांतों की भाषाओं की कहानियों को हिंदी में प्रकाशित किया है, ताकि एक जो हिंदी पर आरोप लगता है कि सब हिंदी तो केवल अपने बारे में सोचती है, तो हमने सभी प्रांतीय भाषाओं की कहानियों को, वहाँ के प्रतिनिधि कथाकारों की कहानी को हिंदी में प्रकाशित किया। सभी प्रदेशों की लोक कथाओं को हमने प्रकाशित किया है, केवल इसलिए कि पढ़ने के प्रति लोगों में रुचि हो, वहाँ का लोग क्या है, वहाँ की संस्कृति क्या है, उसके बारे में हिंदी का पाठक जाने। तो जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना है वो साकार होगी। कहने को बहुत कुछ है, चुनौतियाँ बहुत हैं, तो चुनौती है तो उसका समाधान भी हमको ढूंढना पड़ेगा। अब हम रोज़ हाहाकार मचा हुआ है कागज़ के दामों में। पहले कागज़ के दाम को भी 50 पैसे 1 रुपये बढ़ता था तो लोग चिंता करते थे। अब एक बार में बिल वाले महीने में 3 बार 3 रुपये किलो बढ़ा देते हैं, कोई इसके ऊपर किसी का कोई वो नहीं। और झेलना सब प्रकाशक को है, तो प्रकाशक खरबूजा है, कटना उसी को है, क्योंकि पूंजी उसकी लग रही है, पैसा उसका लग रहा है। किताब बिके तो ठीक है, नहीं बिके तो प्रकाशक का पैसा लगा हुआ है। तो ये भी समझना चाहिए, क्योंकि प्रकाशक के अपने संकट, अपनी कठिनाई है। भारत भर का पूरा हिंदी प्रकाशन दिल्ली में केंद्रित हो गया। पहले स्थानीय स्तर पर प्रकाशन होता था, प्रयागराज बड़ा केंद्र था, वाराणसी बड़ा केंद्र था, जयपुर केंद्र था, बीकानेर केंद्र था, वहाँ तो प्रकाशन समाप्त हो गया। तो उसके हिंदी के प्रकाशक को हिंदी में छपानी तो दिल्ली में छपेगी, तो दिल्ली का प्रकाशक कितना इन्फ्लुएंस अपने ऊपर ले पाएगा। उसकी अपनी सीमाएं हैं, बिक्री की अपनी सीमाएं हैं। बिकेगी तो प्रकाशक जरूर छापेगा। न बिकने की स्थिति में ये सब बातें हमें करनी पड़ेंगी। अगर आज हिंदी का पाठक स्वयं किताब पढ़ रहा होता तो कोई कारण नहीं कि ये सब बात हम कर रहे होते। हम कुछ और विषय पे विमर्श कर रहे होते कि इसकी संख्या और कैसे बढ़ाई जाए, इसमें और क्या इनोवेट किया जाए। हिंदी का लेखक भी नवाचार नहीं कर रहा, वो अपने ठंडे कमरे में बैठ के वो अपनी कविताएँ लिख रहा है, कहानियाँ लिख रहा है। क्यों? वो कहीं जाएगा, श्रम करेगा, शोध करेगा, उसमें पैसा खर्च होगा। जितना पैसा वो खर्च करेगा प्रकाशक दे नहीं पाएगा। तो इस प्रकार से जो एक मौलिक ग्रंथों का रचना होनी चाहिए वो नहीं हो पा रहा हिंदी में, इसलिए हम अनुवाद के ऊपर आश्रित हैं। कोई किताब अंग्रेजी में बहुत अच्छी चर्चित हो जाती है तो हिंदी में उसका अनुवाद करके प्रकाशित करते हैं, वो भी ठीक है, कम से कम हिंदी के पाठकों को विचार तो मिल रहा है। स्थितियाँ गंभीर हैं, पर ठीक है, विमर्श निकलेगा, हम सब आप बैठेंगे, चर्चा करेंगे तो समाज आएगा। आपने मुझे सुना, मैं बहुत आभारी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको प्रभात कुमार जी। आपने बहुत सारी बातें हमें बताई। एक आदमी अंदर से बाहर की तरफ झाँकता है, एक अंदर से बाहर, बाहर अंदर का ये जो फर्क है वो सामने आ जाता है। लेकिन यकीन जानिए कि मैं इनकी बात से सहमत नहीं। हिंदी ने बड़ा काम किया। जहाँ तक मेरी बहुत सीमित जानकारी है, मैं उर्दू का बहुत मामूली पाठक लेकर हूँ,
जाहिर है कि अगर उर्दू लिखना है, किसी भाषा में लिखना है, तो आपको अपनी सारी भाषाएं का थोड़ा बहुत मोटा मोटा ज्ञान होना चाहिए। ये नौजवान लेखकों के लिए बिला वजह का मशवरा है, जिसे वो नहीं मानेंगे। लेकिन मैं निवेदन ये कर रहा कि आज हिंदी में जितने अनुवाद उपलब्ध हैं, और बात तो मैं नहीं जानता, मैंने तो आपको सबसे पहले हिंदी में पढ़ा है। आपका मृत्युंजय मराठी का वो मैंने हिंदी में पढ़ा बादशाह जी के पास में, शिवाजी साहब का, माफ कीजिए। और जो ययाति भी मैं इधर से उधर कर देता हूँ, इतना तो उर्दू वालों को राइट है। तो लेकिन आप यकीन जानिए कि ये हिंदी के पुण्य प्रताप से हुआ ना। हिंदी अगर ये अनुवाद न करती तो हम आपको नहीं जानते, हमें मराठी कब आती, हम कब मराठी सीखते, कम से कम मैं कब सीखता। और मेरे जैसे लाखों हजारों लोग होंगे जिन्होंने आपको पढ़ा होगा, आपको भी मैंने सबसे पहले हिंदी से ही पढ़ा। तो मेरी गुजारिश है कि हिंदी ने बड़ा काम किया। उसने चाहे अपने लेखक से प्यार न किया हो, लेकिन उसने लेखन और लेखक से प्यार किया, इससे इनकार नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रभात कुमार जी। और अब मैं रमेश कुमार मित्तल साहब से निवेदन करूं कि वो आए और अपनी बात आगे। धन्यवाद निजाम साहब। I thank Sahitya Academy for giving me an opportunity to make a small presentation before you. We have a rich culture and accordingly rich literature available in all the languages of India. And these languages carry a lot of weight. Each of these languages and the literature within them carries a lot of weight. And the new, I'll speak about certain things which are quite different here. New national education policy which has come up last year has given importance to our languages. Our government is poised towards teaching in languages. Even science and technology subjects will be taught in languages. The other day, we had a meeting with Department of Science and Technology, and they were thinking about coming up with books in science and technology in languages for teaching among even higher education. So that's where the future lies for languages. The point here is it has to start from the children itself. One of the speakers pointed it out. From the childhood itself, there should be children literature available in the language, so that the child starts learning in his or her native language. I would rather suggest that children books should particularly be bilingual. Hindi in that language or English in that language, and likewise, so that reading becomes easier and learning becomes easier for the child, and there the child gets interested into reading that language all the time, because this is what is missing in our publishing. We need to have literature, bilingual literature, particularly for children. The other thing that I have been noticing is we have been using, when compiling the book or when page setting the book, we have been using non-Unicode fonts several times. My suggestion would be that in typesetting, better use Unicode fonts only, because the future lies with Unicode. Future in the world throughout lies with Unicode, and because that will be compatible to computers worldwide in the long run. Even e-books, creation of e-books becomes much easier when it is typeset in the Unicode. So this is one of the suggestions that I have for publishers, for publishing, that the typesetting has to be in Unicode. That's what is suggested. Now, as a small bookseller, we in fact have been exporting books to almost the whole world, about maybe 80 countries across the globe.
and not only in English, but we have been exporting books in 17 or 18 languages of India. And this has been going on pretty well. So what we have noticed, if you want to have a good market for your books, the books must carry ISBN, International Standard Book Number. What I have noticed is that from my database, I just worked it out just before the pandemic, and we found was about 15% from about 15% to 72% books in different languages do not carry ISBN, unfortunately. So those books will not find any place in the search engines which are created by different people world over, because they give preference to books with ISBNs only. Even bookstores everywhere in the world would prefer having books which carry ISBN. So we have to make sure that each book that is published, even a small book available outside a temple, must carry an ISBN. That is what has been creating a lot of problems. Now, next point that I would like to suggest in language publishing is, see the copyright page. On the copyright page, we should write the name of the title in Romanized format, that is English, Romanized format, the author's name in Romanized format, and some other important information in Romanized format, and including the subject also of the book. You see, poetry you can realize by turning pages, this is poetry. Even novel also, sometimes you might realize, but you may not be able to make a difference sometimes. So, if you write the subject of the book somewhere on the title page itself, say it is a novel, it's a short story book, it is stories relating to Indian history, stories or historical fiction, or say crime fiction or whatever, or even health, yogasana, whatever. All those things, if they are mentioned on the reverse of title page, that makes an easy selection for libraries. You see, librarian wouldn't know all the languages. He would know maybe 2 or 3 languages. But if he is asked to, select books from Malayalam or Tamil or Telugu or say Odia or Hindi or whatever, if he doesn't know that language, how to make selections becomes a problem. This is known as CIP, Cataloging and Publication Data, world over. See, we have been providing CIPs for English language books, but yes, that kind of CIP or that kind of information, I have been impressing upon language publishers also to mention that information on the copyright page, because that will help a lot. Anybody picking up the book will know, okay, this book is so-and-so, authored by so-and-so, and the subject is so-and-so. This is, I think this is one of the very essential parts of. Now, what we have to do is, even quality of production, of course it has improved a lot. If I compare the quality of production say 40 years back and now, it has tremendously improved. But I will still suggest that we should hanker for quality of printing and cover and all that. That's indeed very important, I must say. Because I have seen some, I won't name the language here, say, Pulp Fiction is there, ठीक है, और रेलवे स्टेशन पे बिकता है, उसी स्टाइल में उसको प्रिंट भी कर दिया गया. No, it should be readable so that more and more readers have interest. The paper has to be good and all that. I know that there are problems with the prices of paper and the costs have gone up, the sales have come down, and this is what is killing the industry at the moment. But these are some of the things about a book that I had in mind which I shared with you. Now, there are, in order to develop readership, we have to think about marketing in different manners, which is, I mean, some things have been discussed already. Websites, publishers should develop their websites and portals, and also go for digital marketing.
Nowadays, printing a catalog and sending it across is a lot of cost, huge cost. And then, through digital marketing, you will be able to reach not only your customers locally, but perhaps worldwide, wherever. Supposing there is a Marathi book, Marathi living in the US or anywhere would be able to watch that digital marketing. There have been online book fairs coming up, and I'll suggest that there should be online book fairs for each of the languages also slowly. Because the benefit of online book fairs is you may not get much sale. Of course, at the moment not. But perhaps after 3-4 years, that will become a way forward for selling books. But what happens is, if say one language, say Marathi sir, if there is a Marathi book fair, online book fair, and if authors also participate, it's not very costly also normally. At least the message goes as to what has all been published. And what happens is, a physical book fair you are able to see only when you visit that book fair. Here you are able to see it anywhere sitting in the world. So this is slowly, it makes sense to promote your stuff among readers. We were talking about translations and rights exchanges. Yes, this is another way forward. And you see, like it was mentioned, that translations into English or perhaps Hindi would make sure that the book is further translated into other languages. Because if you want to get, say, a Marathi book or Malayalam book or Tamil book translated into, say, German, there will be very few, or I will say counted people who would know that original language and the German. But through English perhaps there is a possibility of reaching out. Of course, the publishers there abroad, they have their own terms and conditions, they have their own reasons. If the book sold pretty well in Marathi, and if the book sold thereafter pretty well, very good in English, only then they will sign an agreement for a translation into their language. But that's a source of income. But yes, this is a process involved. Now, there are some suggestions in regard to the government support or government intervention that is required in certain areas. We were talking about the book database, how many books have been published. The American asked that Marathi publisher. We don't have any national book database, unfortunately. I am sorry to say. I have been pleading about it very often. Even at the National Library, I spoke about it. There should be a national. They talk about that they have a national database, but that is a fraction of it. We need to have a national database of books, so that what happens, if a national database is available online, so you all know how many books have been published in such and such language. How many books were published in the last 10 years in that language. How many fiction books were published in that language. How many non-fiction were published in that language. All those things are very important. Most of the nations, they have national book database, but we don't have one. So this is what I would like to urge Sahitya Academy to go forward and speak to the government, Ministry of Culture, to think about creating a national book database. Now, sir, we live in a city like Delhi here, and there are such cities across the country, and then the state headquarters. Do you think there is a Marathi bookshop, sir, in Delhi? And if there are Marathis living here, or a Telugu bookshop, or a Tamil bookshop, or a Bangla bookshop, people are living. I mean, say what happens is in Bangalore, I read in the newspaper, they have people from about 100 languages living there. Is there any bookshop available, sir, where I can go and buy my book? At least मुझे मेरा सत्यनारायण कथा पढ़ने के लिए चाहिए, घर में पढ़ने के लिए, तो वो भी नहीं मिलेगा मुझे, हिंदी में ढूंढ रहा हूँ तो मैं, अगर मैं सपोजिंग कहीं मतलब इंडिया के किसी कॉर्नर में रह रहा हूँ तो, कारण there are no such bookshops. Bookshop system is getting vanished.
I suggested this to a Telugu friend, publisher, who came about 10 years back. He was going to Ministry of Education then for some meeting. I said, you talk about this, that government should give some space in Central Delhi maybe and slowly in all over India. क्योंकि rent afford नहीं कर सकते हैं, because through the sale of books you cannot recover the rent. But if there are on the lines of say handicraft emporiums here, why can't we have say bookshops, large scale bookshops where there are corners, different rooms or corners for say each of our languages where books come, and which should be a happening place where readers come, where